Well, So shall we start? Yes. So, hello audience, welcome to the Russell of Book Club podcast series, the show where we embark on a journey to unearth the hidden gems of human potential and talent. Join us as we connect with individuals who have yet to discover their full capabilities and talents, delving into their unique stories and experiences. Together, we will unravel the mysteries of self-discovery and celebrate the extraordinary in the ordinary. So sit back, relax, and let the rustle of inspiration guide you on this captivating exploration of untapped potential. Welcome to our episode. Today's guest we have Ms. Neena Bhattacharjee, TEDx speaker, leadership coach, global talent management leader. Hello, ma'am. I hope you are doing well. Hi, I'm doing very well. Hope you're having a great festive morning as well. Yeah, ma'am. बस आपसे बात हो रही है तो इससे अच्छी मॉर्निंग और क्या ही होगी हमारे लिए. That's Uh, got a compliment. can we start on? Yes. So I'm starting with the first question. Could you please introduce yourself, share your journey of becoming a TEDx speaker, leadership coach, and a trainer? All right. Okay. So TEDx thing, my talk at TEDx came towards the end of my, the so-called corporate career that I had. So I'll tell you about my journey. I was actually born in a, middle class family, educated middle class family, and I grew up. Those days there were only two things that we could do. You could either to get respect. First, you had to study science, and then when you're in science, you have to either choose to be a doctor or an engineer. And if you're not, then you have no value. And so I kind of wasted 1 year trying to, write my MBBS exams. And of course, that was neither my potential nor my interest, which I discovered later. So I got into a new course which was being offered by Delhi University, and that was applied psychology at the undergrad level. And I, took that course and I did my honors there. And I also did my master's in applied psychology, and I specialized in organization behavior and development. So for us, we were the you used to laugh and call ourselves the guinea pigs. That because we thought that the university was doing some experiments on us. Whatever books we wanted were available only after we had gone to next year. Uh, and I did my training at Maruti factory where I studied the problem of absenteeism. It was only much later, with wisdom and experience, that I figured out that here I was holding a knowledge, uh, more than a degree, because degree means nothing if you haven't really studied, or you don't really it doesn't really open your eyes or vistas. So I realized that this was a subject which was so much in demand, which was so important, but it was not in demand. I stand corrected. And over the years, I have seen how people have become open to the fact that human behavior in an organization is important. uh, an organization is actually it's people. The technology, the machines and everything, the infrastructure is all built by people only. So the biggest resource that an organization has is its people. So that's learning that I got over the years, and I kind of settled with that. And I have worked with a variety of companies. Each company that I worked with, I started with NIIT, worked with Citicorp, I've worked with the advertising media industry, I've worked with IT, telecommunications, electronics. My last job was with Samsung Electronics. I was in the leadership HR domain, where we were supposed to develop leadership programs and all that. And I believe that leadership is the key attribute of any individual. And leadership is not just applicable for corporates. It's there. You could be a social leader. You could be working for a non-government organization. You could be working in a school, in a management institution, in a government job. So leadership is not confined to a specific set of
organizations. It's applicable everywhere in our everyday life. We should be a leader first. The first step is towards self leadership. So that was my journey, very corporate, and I was very passionate about teaching management students because so that's the qualification I also have, organization behavior. So management students do study a bit of, though my master's was in applied psychology, my specialization was in organization behavior and management. So I took a kind of a little break from my corporate life, and then I started teaching in management institutes. And the first uh, course that I taught was on competency mapping and assessment center at IMT Ghaziabad. And then I was very passionate about, speaking for being a TEDx. I think that's everybody wants to, that's a big platform. And then interestingly, I was approached by this university, DIT University in Dehradun, and they were looking for something for the students, the youngsters. That's the age when there is, I feel that in today's youth there is a lot of information. Sometimes distilling the information is difficult. They get overwhelmed, they are confused, they want to know what to do. So they approached me, and I did a session on self coaching for excellence. So that's how this little story is. I mean, आपको सुन के ना एकदम ऐसी फील आती है आप women who used to grab the opportunities whatever comes to her. Arham, Basic, I'm not able to मतलब, hear you clearly. am I audible now, ma'am? Yeah. Yeah. So basically I was saying कि मेरी भी एक सिस्टर है. She Okay. almost same, मतलब उनका भी एकदम आपके एक्सपीरियंस था, from science Acha. background. Then she took some course in university which is I guess from something commerce background, and now she's Okay. teaching the subjects of humanities. Yeah, of course. You'll be surprised to know that, and I'm sure you probably know already. If you look at, the old philosophers, if you look at them, they were polymaths. They would be, Yeah. very good in linguistics, language, grammar, Yes. philosophy, mathematics, astrology, astronomy. So these subjects were not divided. Like your life doesn't come to you like in a Yes, ma'am. disintegrated form. I mean, so if you know about human biology, you can use that knowledge anywhere, right? About diets, about Yes, ma'am. human body, reproduction, digestion, and all this. We also need a bit of mathematics. See, look at the kind of architecture. Mm. जो हमारे temple structures आप देखेंगे, Yes. those which survived. If you look at that, आप देखोगे उसमें कितनी artistry है. But there is also a lot of trigonometry there. There are a lot of formulas for you to Yes. Yes. be able to erect. तो ये नॉलेज जो है ना वो हमें डिवाइडेड पढ़ाई जाती है, बट लाइफ में हमको नॉलेज इंटीग्रेटेड वे में ही काम आती है. सो आई थिंक I find those people lucky who are able to experience different flavors of education, like your sister did or I did. That's true. मैं एक छोटा सा डाउट था वैसे. That's my personal doubt. हाँ You बोलिए. said you did a psychology course from DU, right? Yes, my undergraduation and post graduation, I Yeah. mean BA and MA. Yeah, So ma'am, you took science, right? Then I was आपने in science in psychology class किया. 12. Yes, yes. Yes, yes, yes. Then you did psychology. Then you go into a management. मतलब एक मारुति फैक्ट्री में मतलब क्या यूज, मतलब ये कहते हैं ना, क्या पर्पस से आप इसमें गई थी? साइंस अच्छा, मैं बताती साइकोलॉजी हूँ मतलब आराम मारुति आपको. फैक्ट्री. देखिए, मैं आपके दो तीन भ्रम दूर करूंगी, या जो आपके थोड़े कंफ्यूजन है. एक तो साइंस, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो इट्स अ सोशल Okay. साइंस, Yeah. इट्स नॉट अ प्योर साइंस, but it is Yes, data ma'am. driven, right? So you cannot say that and in west, in US universities, psychology, especially clinical psychology, is treated as a Mhm. STEM course. So that there goes the disconnection of science and psychology. Psychology is not divorced from what do you call science, absolutely. Yes, ma'am. And since psychology is a study of human behavior, organizations में कौन बैठ होते हैं? Human लोग ही काम करते हैं ना. Yes, ma'am.
आपको आप चाहे इंजीनियर बन जाओ, आप चाहे डॉक्टर हो जाओ, आप चाहे टीचर हो जाओ, या गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो या काम भी नहीं कर रहे, यू डोंट सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग, है ना? तो यू विल हैव योर ओन challenges. So I'll tell you something very interesting. When you were introducing me, you also said that I'm a global talent management leader. And so, the definition of talent is a person who knows the job plus has leadership skills. And it says that these can be improved or honed. आप एक ह्यूमन बीइंग को if उसकी efficiency को increase कर सकते हो simply by right kind of motivation. There was a study in Harvard study. I'm going to share this with you. You'll find it very interesting. That said that, it was on daily wage workers. कि आप अपनी a human being can retain his or her job at 30% of his or her efficiency, है ना? जितना मेरी पोटेंशियल है उसका अगर मैं सिर्फ 30% यूज करूंगी तो आई कैन सर्वाइव इन माई जॉब. However, a good leader who can motivate me can get me from 30 to 100. So that is a human intervention from one human to another human. So a motivated person can grow so much in his productivity. तो ये है इम्पोर्टेंस ह्यूमंस की इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन से ह्यूमंस निकाल दोगे बचेगा क्या? आपकी एआई भी तो ह्यूमंस ने ही बनाई है ना. Yes, ma'am. सो आपको कनेक्शन समझ में आया? डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. Now I'm clear. Right. How When you you're observe me motivated, and the path. your performance increases. आप देखिएगा जैसे for example you see those, आपने वो आजकल इतना नहीं नजर आते because technology is improved, but you remember if you see pipe layers, and वो पहले जब pipes को ले किया जाता था तो वो मजदूर वगैरह उनका ग्रुप होता था, they would pull Yes, it and ma'am. they Yes, would be ma'am. kind of Haisha and all that, something they would say to motivate themselves. You see the army when they go to fight, they are motivating themselves. They are, आप देशभक्ति के गाने गाओगे या motivational speech दोगे, and then you will perform better. So, and if your teacher, for example, praises you, I remember मेरी हिंदी की टीचर ने क्लास 7 में मेरे को ग्रुप कैप्टन बना दिया, a group, and I was a captain of that group. My job was to check the homework and classwork of my fellow students, my friends. Obviously we were in the Okay. same class. उससे Yes, मुझे ma'am. ये असर हुआ कि मैं उस सब्जेक्ट में मैं हमेशा से टॉपर हो गई, because I felt, and all this I can say with wisdom of an adult, when I was in class 7 I didn't understand कि ऐसे क्यों हुआ. वैसे इसलिए हुआ because that teacher put her faith in me and I had to live up to that expectation. So from a mediocre student, I became a topper in that subject because that teacher showed her faith to me. So all this is about human behavior, about motivation, about trust, about expectations, and so on and so forth. है ना? आपको That's समझ आई great, बात? ma'am. Yes, ma'am. Connection समझ गई. I'm starting next question. वैसे तो आपने next question का आंसर first question में दे दिया, but still I think कि आपके पास और stuff है इस question में ऐड करने के लिए, तो तभी आपसे पूछने वाला. Sure. So the question is, will you please tell our audience something about TED Talk, TEDx Talk, basically. Right. So TED topic, the topic that I chose was, I got the brief of what they wanted. These students were ready to go into the corporate world. That's the time when you're anxious, you have self-doubt, you want to understand, and students in general who want a bit of guidance. And you will see that there is a huge difference, because I've seen my life when I was younger, your age probably, and I see now, and I see that there is so much information available that it is overwhelming. However, information, knowing something is not knowledge, right? Knowledge is you understand the application, you imbibe it and all that. So there is this super connectivity, there is an information explosion, there is everything is there on your table. And I have seen, because there is also a lot of talk about, for example, things like
depression, anxiety, so on and so forth, frustration, that I'll give you an example of what happened. So when I started studying psychology, I was reading a lot of general books on adolescent psychology, identity crisis, this, that, and we were reading it. I was wondering why Okay. this important thing, why I did not go through this, मुझे अच्छा लगा मेरे साथ ये धोखा कैसे हो गया कि मैं मेरे साथ क्यों नहीं हुआ identity crisis, right? So what I'm trying to say is that because there was nobody who was even talking about it. It was not important. It was not a part of daily conversation. And it was a done thing that parents would give you a little structure and guidance. In certain families, parents were more strict. In my family, they were not so strict. And but there was a structure. There's a track. Is track pe chalna hai. You are a student. You're supposed to study hard and get good marks. Then you're supposed to follow certain value system, value money, and all these things. And we had a great time enjoying life. हमारे कंधों पर दुनिया का कोई बोझ नहीं था, एनवायरमेंट का बोझ नहीं था, एनिमल्स का बोझ नहीं था, जेंडर सेक्सुअलिटी का बोझ नहीं था. We were only enjoying life as 10-year-old, 12-year-old, 14-year-old, 15-year-old. Now what has happened is, with so much of awareness and all, I see that youngsters are also carrying the load of things, that they are also carrying the load of who's ruling the country, who should rule the country, politics and all. I'm not saying that you Yes, should ma'am. become indifferent, but what I'm saying is that to get emotionally involved with everything will exhaust you, right? So mine was self-coaching for excellence. And I chose the topic of excellence because I have seen the article generally I have seen across age groups कि लोग excellence और perfection में confuse हो जाते हैं. Both are very different things. Okay. Perfection is a specific around and perfection, if you ask me as a psychologist, I would say that perfection does not exist. It's kind of a mental ailment, in the sense that so if it's a perpetual desire for perfection is a mental ailment, but perfection in a structured environment, for example, may not be. Like, for example, you say that like if you're a gymnast, for example, right? Or so you see gymnast will come and perform और आप उसको 10 score देंगे ना. So अगर वो 10 है, 10 on 10 is a perfect score, right? Yeah. But when you take it out of that, for example, game, so that level of expertise could, say, 10 years, 15 years later, be 5 times better and still get a score of 10. I hope I'm making myself clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो structural perfection हो गया, right? But in your life, if you're waiting for a perfect speech to be written, a perfect act to be done, a perfect boss, a perfect subordinate, a perfect leader, a perfect husband, boyfriend, वो होता नहीं है. So that kind of an expectation from perfection is not desirable. So excellence is that you become up a continuum में जा रहे हो. If you understand a continuum, something which is continuous, and you're becoming better than who you are every day. And when I said self-coaching, your focus is on yourself, and you are not waiting for somebody to come and deliver you कि मेरे को कोई आके मुझे excellent बनाएगा. We can become excellent ourselves. Excellence is a continuous improvement कि मैं आज जो थी वो कल से better हूँ. For example, if I want to lose weight and I'm losing it by, say, even 500 grams or 250 grams, for example, I don't know if we have certain machines जो इतना minutely देखें, but एक example के तौर पे बता रही हूँ. तो I'm becoming a better version of myself, right? मैं अपनी goal की तरफ जा रही हूँ. But if I say that I want to like lose, अभी मैंने I will only go into losing my weight if I start losing an X number every day, then that's a wrong strategy. So the focus on this was कि आप अपने आप से कैसे, you create smart goals, have a gratitude journal, use the power of visualization. आपकी mental, हमारे अपने दिमाग में इतना power है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, and वो भी हम लोग, you would have सुना होगा आपने कि people can, faith can move mountains, and it actually can move mountains. Yes, I'll give you the example of this guy Manji, Dashrath Manji, बिहार में या कहाँ पर वो, उनकी सुना है आपने किस्सा?
दशरथ मांझी वाज अ नॉट लेबरर, उनकी श्योर वाइफ अबाउट इट। को हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई एंड शी डाइड बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज द माउंटेन, उसके ओके। अराउंड इट सर्किटस रोड पे जाना पड़ता था। तो ही गॉट एंग्री, ही सेड यस। मैं इसको पहाड़ को काट के रोड बनाऊंगा। एंड what did he have? He had a chisel, एक छोटा सा एक chisel लेकर के, and people thought he was mad. It took him 20 years, but he single-handedly made a, उसके ऊपर मूवी भी बनाई। I think he passed away a few years ago. एक सिंगल आदमी ने पहाड़, पथरीले पहाड़ को, इट्स नॉट अ नॉर्मल, नहीं, वो पत्थर वाला जो पहाड़ होता है उसको उसने काट काट के एक रोड बना दी। You see, so the power of human mind and determination is enormous. So so that's the topic I chose, and I thought that if we can give them those little pointers, and then we have that internal हमारी एक voice होती है, उसको कोई ग्रेमलिन बोलते हैं, उसको कोई सैबोटियर, दैट्स अ सैबोटियर इन द सेंस, जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हम लाइफ में हमारी जो परसेप्शंस बन जाते हैं वो, और फियर्स हो जाते हैं, वो बचपन में बनते हैं, बट वी कैरी इट एज एडल्ट्स. So we say that, okay, that little voice, you want to do something new, somebody will say that, but what if you fail and people laugh at you, so that is a little voice trying to protect you, लेकिन वो actually आपको harm करती है. तो इस तरह के जो टॉपिक्स थे, आई थॉट मैं कवर करूंगी कि वी ऑल कैन सेल्फ कोच आवरसेल्व्स ऑन अ जर्नी ऑफ एक्सीलेंस, राइट? अगर आप रोज improve कर रहे हो, रोज एफर्ट कर रहे हो, so you will get a win-win situation, right? But if you're trying for a perfect start, for a perfect goal, for a perfect this thing, that never happens. Because every day when you're doing something, when you start the journey, आप रास्ते में समझ जाएंगे, अच्छा ये मेरा शॉर्टकट हो सकता था, I'm just talking about a real journey. अगर आप जाएं कहीं पे, अच्छा ये शॉर्टकट हो सकता है, यहाँ पे मैं दौड़ के जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिफ्ट ले सकता हूँ, so on and so forth, and I can reach my goal. लेकिन जब तक आप अपने घर में बैठे हुए और विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे जाऊंगा, व्हाट इफ आई गेट स्टक एंड लॉस्ट एंड ऑल दैट, देन नथिंग विल हैपन. So the excellence orientation helps you start your journey from now, wherever you are, and become better. जी। हम आपके स्टोरी सुन के मेरे को अपनी एक दोस्त की स्टोरी याद आई, उससे मेरे को लगा आपसे वो कि हाउ कैन आई मोटिवेट हर। Okay. वो भी एमबीबीएस के लिए ही रशिया गई है फॉर स्टडीज। ठीक है। सो Okay. अप्रॉक्स 1 मंथ होने वाला है उसे। यस्टरडे कौन है और ये? सॉरी, डे आप बिफोर किसकी यस्टरडे। बात कर रहे हैं? वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अच्छा, आपकी फ्रेंड, ठीक है. यस मैम। सो yesterday or a day before yesterday she called me and said, या भाई मेरे को ना यहाँ पे बहुत वियर्ड लग रहा है। मतलब परफेक्शन, यहाँ पे ना लोग परफेक्शन चाहते हैं बहुत ज्यादा, और इंडिया में हम थोड़े चिल आउट टाइप है पीपल। लेकिन रशिया के अंदर सब परफेक्ट देखना है, तो मेरे से परफेक्शन नहीं हो रही, हर चीज गलत हो रही है, ये वो, मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ, मैं कुछ समझाना कैसे करूँ ये वो। सो मैंने उस उन पे टॉपिक को टाल दिया कि आई डोंट नो कि इस टॉपिक से मैं क्या मोटिवेट करूँ, कि वो इतनी दूर है कि मेरा कुछ एक गलत पॉइंट भी उसको शायद डिमोटिवेट कर दे। तो हम कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक कि कैसे उसे मोटिवेट करो। प्रोफेशन की बात चली रही है तो आई थॉट कि आपसे अच्छा बंदा कोई होगा ही नहीं ये टॉपिक समझाने के लिए मेरे को। तो आरव, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इन स्ट्रक्चर और सिचुएशन, जब मैंने आपको यस जिम्नास्टिक्स मैम। के बारे में बताया ना, कि एक जिम्नास्ट होता है, उसका एक 10 पॉइंट्स का स्कोरिंग का एक क्राइटेरिया होता है ना. यस यस। सो अब उस 10 पॉइंट का स्कोरिंग इंटरनेशनल क्राइटेरिया, इफ यू से कि हम लोग इंडिया में जिम्नास्टिक्स में इतने इतने अच्छे नहीं अभी तक बन पाए, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग सम मेडल्स, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राइट? So there is this cultural and ethical and organizational expectations that people will have. While I was telling you about perfection is about me, my expectations from myself, right? लेकिन इट्स पॉसिबल कि मैं एक ऐसे माहौल से उठ के दूसरे माहौल में जाऊं कि जहां पर आपको बीइंग एन एवरेज प्रोड्यूसर, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप 30% ऑफ एफिशिएंसी में काम करके भी आपकी नौकरी बची हुई थी. आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हमने इंडिया में भी देखा है कि कुछ लोग काम ही नहीं करते, पर उनकी नौकरी भी पक्की है और उनकी सैलरी भी पक्की है, तो उनको जरूरत ही नहीं यस अच्छा मैम। बनने की, है ना.
लेकिन जब आप Yes. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो तो आपको पता है कि 1 महीने से लेकर 3 महीने का नोटिस पे आपकी नौकरी जा सकती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसी इंसान की जो है परफॉर्मेंस एकदम अच्छी हो जाती है, राइट? सो सिचुएशन एंड Yes. स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया और इंसान का बिहेवियर भी डिफरेंट हो गया। यू गेट माई पॉइंट? सो योर फ्रेंड इज Yes, प्रेजेंटली ma'am. हैविंग सम टीथिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज शी इज गोइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। You just tell her that you will settle eventually, right? It's just that कि तुम्हारी अपनी expectations जो थी काम करने की अब तुम्हें उससे हाई करनी पड़ती है, and we all have that potential to live up to those expectations, but as long as Yes, she ma'am. will keep resenting it कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब आप देखेंगे ना, अब आप जनरली, मैं एक आम बात कर रही हूँ, आई एम नॉट डाउटिंग आवर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस, बट many times you see people saying that यार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है, why don't we follow traffic, हम इतने पब्लिक में आके हम गंद क्यों करते हैं, क्यों हम अपने पैकेट को बैग में रख के कहीं और डस्टबिन में जाने की वेट नहीं करते। Yes, ma'am. बिकॉज एज अ सिस्टम वी गॉट यूज टू। देन मेनी टाइम्स यू वुड सी कि कोई बाहर से आया है फॉरेनर, वो भी आप देखोगे एक कचरे के ढेर में कुछ डाल के चला गया, बिकॉज उसका बिहेवियर भी सिचुएशन के हिसाब से बदल गया। आई एम जस्ट गिविंग यू लूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन माय पॉइंट। Yes, yes. आई एम Yes, नॉट ma'am. सेइंग दैट हम गंदे ही हैं और वो अच्छे हैं, बाहर अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं मैं कुछ कह रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। Now in an organization I worked with this Korean company, Samsung Electronics, I that was my last company. उनका एक सिस्टम था कि आपको सुबह अटेंडेंस जो है, आप 3 बार अगर 1 मिनट से ऊपर आप लेट हो तो आपकी हाफ कैजुअल लीव कट जाएगी, राइट? Okay. एंड देन देयर Okay. वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क विद, एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, वहां पर लूज था। मतलब जैसे आप लेट ऑफिस में काम कर रही हो, क्रिएटिव टीम काम कर रही है, अब ज्यादातर अगर आपको पिच करना है नेक्स्ट डे तो आप रात भर काम कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट? Okay. एंड देन वो नेक्स्ट डे अगर उनकी पिचिंग नेक्स्ट डे शाम को है तो वो शाम को ही आएंगे, right? So there the arrival time was a little flexible. So in that context हम लोग कभी भी टाइम पर आने के लिए, so sometimes management would say कि यार लोग तो बहुत ही लेट आ रहे हैं। Sometimes when you go late, you come late, that's understandable, आपने हैबिट ही बना लिया लेट आने का, right? So if those people were supposed to join this company, Samsung Electronics, वो देखेंगे अरे यार मेरी तो लीव ही कट रही है, तो वो नेक्स्ट डे शायद 3 दिन लगाएं, but they will come on time. लाइक यू डोंट मिस योर, हम अपना प्लेन कभी 2 मिनट पहले नहीं पकड़ते ना, हमें 1-1.5 घंटे पहले जाना होता है। बट ट्रेन जो Yes, है वो ma'am. चलने से पहले भी हम घुस सकते हैं उसके अंदर, तो हम कई बार वी पुश योरसेल्व्स सो मच कि हाँ अच्छा ये भी कर लेते हैं, अब तो ट्रेन ही तो पकड़नी है, एज लॉन्ग एज द ट्रेन इज स्टैंडिंग आई कैन जंप इनटू इट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रॉब्ली टेल योर फ्रेंड कि ये सिचुएशन अलग है, इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, एंड डू नॉट अंडरमाइन योरसेल्फ। हम सब में पोटेंशियल है अपनी कैपेबिलिटी से बहुत आगे बढ़ के काम करने का, एंड दिस इज हर अपॉर्चुनिटी टू सी कि उसके अंदर कितना कुछ काम करने की क्षमता है, कितनी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है। कर लोगे उसको आप मोटिवेट? हम अब कर पाऊंगा। I guess I'm an stiff dictator. साथ साथ खुद भी मोटिवेट हो जाओगे। मैम हो क्या जाऊंगा। ओके, वंडरफुल। Yes, ma'am. फिर तो ये Some तो next हमारा question. कॉन्वर्जेशन सार्थक हो गया काफी। हाँ, मैम जब मेरे को पता चला आप आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू के लिए, सो आई वाज लाइक कि अब तो मोटिवेट हो ही गया, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में मोटिवेशन के लिए। I wish I can record it and make my kids listen to this. वो हंसने लगेंगे, कहेंगे मम्मा आप क्या बात कर रहे हो। Some next question. Correct, sir. Some self-leadership as the audience are mixed and it will cater to all the age groups. ओके सो दैट्स एक्चुअली आई गॉट इट। मैं एक्चुअली मेरा कॉन्वर्जेशन जो है वो मैंने इस तरह से ही प्लान किया है, बिकॉज राहुल ने मुझे बताया कि जो पॉडकास्ट को सुनते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, एज ग्रुप भी अलग अलग है, तो मुझे लगा कि मैं इस तरह से बात Yes. करूं कि सबको थोड़ा सा कनेक्शन आए, सबको लगे कि हाँ मुझे कुछ मिला इस कॉन्वर्जेशन से। सो दैट इज द पॉइंट दैट I've written, yeah.
और कोई क्वेश्चन है अरहम, तुम्हारे मन से अगर कुछ सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. वी हैव टाइम. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. हाँ मैम, और क्वेश्चन है ऐसे. मैं पर्सनल डाउट यही है. हाउ हैज लीडरशिप इवॉल्व्ड ओवर द years and have become an effect how to become an effective leader basically मैम. यू आर अ ग्रेट मैनेजमेंट लीडर. आप एक कहते हैं ना, एक मिट्टी में से उभर के आए अलग से. तो हाँ, हम सभी किसी न मतलब किसी आपकी जो मिट्टी से उभर जर्नी के थी. आए. हाँ देखो, मैं अरहम, आई टेल यू, ऑल ऑफ अस आर यूनिक. हम सब इंसान एक यूनिक क्रिएशन है, and all of us यस have मैम. the potential to become a much better version of who we are. And another very interesting thing is कि अगर आप right kind of training और practice करोगे तो you will actually rise to the level of a genius in any field. कि आप, for example, take a good guitarist, a player, a singer, an actor, mathematician, whatever, scientist. They all have some kind of a basic ओके. interest and कैपेबिलिटी और टैलेंट. किसी में कुछ ज्यादा है, कोई कोई अच्छा गा लेता है, किसी को मैथ्स अच्छी ओके. समझ आती है, किसी को लिटरेचर अच्छा ज्यादा समझ आता है, लैंग्वेज ग्रामर समझ आती है. दैट इज योर बेस फॉर whatever attributes that you have, depending on आप किस फैमिली में हो, आपने क्या. ओके. सोचिए आप 7-8 साल का बच्चा या उससे भी छोटा, इफ यू स्टार्ट ट्रेनिंग दैट चाइल्ड इनटू एनी फील्ड, वो एक बहुत ही एक्सलेंट. लाइक आप देखेंगे ना हमारे यहाँ जैसे क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है. हमने यस वीडियोस मैम. देखे हैं जैसे चाइना में या बाहर भी, अगर एक अच्छा जिमनास्ट बनाना है तो वो दो साल के बच्चों से शुरू करते हैं. बैलरीनास यस हमारे मैम. यहाँ, क्लासिकल डांस, सिंगिंग, ये सब जो है आप देखेंगे, गुरुकुल हमारा सिस्टम होता था. बहुत छोटे से यस बच्चों यस. को अगर आपने एक्सपर्ट बनाना है, दे हैव टू गेट स्टोक बाय 14-15. दे आर very good in there. By the time they have spent roughly about 10 to 12 hours in that. So एक अच्छे लीडर के लिए सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर होना बहुत जरूरी है. आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी जनरल थिंग कि लीडरशिप रोल जो एक इंसान का तब आता है, अच्छा लीडर वो तब बन पाता है कि वो एक अच्छा फॉलोअर भी है. वो सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी ड्राइव होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की एम्पैथी होनी चाहिए. वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा तभी वो दूसरे को मोटिवेट कर पाएगा. So effective leader is always the one who is able to impact people in a very positive way. So effectiveness comes with your interaction with people, your team, and how you make them do their job in a better way than they would have done ओके. otherwise. आई गेस मेरे को भी काम आएगी ये लाइन तो. दैट्स आई हाँ, शुड जरूर, रिकॉर्ड सबके एंड लिए, लिसन. सबके लिए. ये तो मेरे को लाइन रिकॉर्ड करके हर दिन सुनूंगा डेफिनेटली. Good on that, So Aram. shall we end this? I think You have राहुल ने anything to add इंडिकेशन on? दिया है एंड करने का. Yes ma'am. So thank you for joining this episode and stay tuned for the next episode. And till then, please press the bell icon. Thank you, everyone. Thank you.